at all. आपके जो भी doubts है, whatever doubts you have will be cleared by me. कोई सा भी कैसा भी doubts है, I will clear. But please listen to me first. In between, we will have doubt section. आपका जो भी question है, I'll solve them. Okay? So people, I am here to teach you two main techniques of fabric painting. As in, these are the part of fabric painting. Okay? Now what I think is, you guys can draw, you guys can paint on the fabric. That's somewhere you will learn from the YouTube, or you can do it by your own. You all are intelligent people. But I am here to teach you a little different techniques which are very fast to do, and you can design your cloth very nicely. Okay, everyone ready to learn? Okay, yeah, no problem. Yes. Yes, I want more yeses. Everybody is ready to learn some new techniques. Yeah, all right. And those who have asked some questions, I will take them up in the doubt section. Don't worry. All right. Yeah. Okay. Let's move ahead for the first technique called sun printing. Acha ji, what do you understand by these words? Sun printing. Kya matlab hai? What we are going to do? We are going to paint the sun. What we are going to do? Any ideas? Yes, you can do it on the cloth. Shoes also. उस पे भी कर सकते हैं. मैं आपको बताऊंगी. सब doubts I will clear. Don't worry, people. Don't worry. Okay. Any idea about sun printing, people? Do you have any guesses what sun printing means? Sunlight में करेंगे. Drying in the sun. Okay. What about others? कोई idea? नहीं idea है तो type no idea. No problem. Okay. Printing with some objects, okay. That's nice, that's nice. Okay. Sun drawing sunset type of cloth, type on cloth. We draw sun on cloth. I get this a lot. All right, people, thank you so much. Let's learn sun printing. Very beautiful and easy technique to draw something, let's say not draw, to print a design on your fabric, है ना? बड़ा मजा आएगा. To print something exactly as it looks, same to same, will get the print on our cloth. How to do that? All right, I'll move on to the practical, and meanwhile, I'll show how this is done. Okay? For this technique, you need, please listen to this very carefully, okay? For this technique, you need 100% natural cloth. What does this mean? Your cloth needs to be either cotton, linen, silk, wool, rayon, other varieties of cotton, and so on. Okay? The cloth needs to be 100% natural cloth. Okay? Cotton best hai, are very easily available. You can get the cotton. And then the colors which I will be using are either fabric colors or acrylic colors. No other color than these two colors, like watercolor ले ले या पोस्टर ले ले, ऑयल प्लेन्स ले ले. हाँ बिल्कुल हिंदी में भी समझाऊंगी, कोई टेंशन नहीं है, आपको कुछ लूज नहीं होगा. ओके, ऑलराइट. सो नो अदर कलर देन एक्रेलिक और फैब्रिक कलर ये लेना है. और कपड़ा जो है आपका 100% नेचुरल होना चाहिए. कॉटन ले तो बेस्ट है. ठीक है. Now let's begin the technique. I'll turn down my camera and yes. Okay, so this is my Haji, I'm coming. I'll ask you this question, okay? So don't worry. आने दो यार, थोड़ा सा मुझे बोलने दो. We'll come to the doubt section and we'll solve all your doubts, okay? मेरी बात सुन लीजिए please, और आपको पूरा time I will give to solve all your doubts. All right? So yes, this is the cotton cloth. All right? Now, it is very best, presented on a white piece of cloth. तो आपको क्या लेना है? Cotton cloth होना चाहिए, white cloth होना चाहिए, और हमारे जो fabric colors या acrylic colors है ये होना चाहिए. All right? Now, if you are going to take any other color cloth या any other type of cloth, this technique won't work that best. ठीक है? मजा नहीं आता. सबसे ज्यादा मजा आएगा आपको this cloth, that is cotton, or 100% natural cloth, or white cloth. ठीक है जी? All right. Now this ring, if you don't have, this is embroidery ring. If you don't have, that's very fine. You can just place it on your floor or your table and you can work. Okay.
अरे बाबा, आई विल कम टू योर डाउट्स. ठीक है, सारे डाउट्स आई विल सॉल्व. डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू रन एनीवेयर. आई विल गिव यू डाउट सेक्शन. ठीक है, एक बार जस्ट लर्न दिस आर्ट फॉर्म एंड देन वी विल कम टू योर डाउट सेक्शन. आई थिंक आई हैव जस्ट स्पोकन दिस 5 times हियर. इतना जल्दी, इतना ईगरनेस, आई एम नॉट गोइंग ऑन एनीवेयर. ओके, चलो, ऑलराइट, लेट्स बिगिन. All right, you can see this. This is the base. And now for this technique, you need bigger brush. Okay. And a flat brush. If you have a flat brush, that's work better. ये 12 number का brush है. Flat होना चाहिए और थोड़ा बड़ा होना चाहिए, right? All right. Now, moving ahead, I will explain everything. Not to worry. Just see what I'm doing right now and why it is so. सारा आपको phenomena, everything will be explained. Yes, anything? Okay, all right, so this is the cloth. Now you have to wet this cloth. आपको इस कपड़े को गीला करना है. इसका मतलब ये नहीं है जैसे have to put it in the water. No, ऐसा ड्रिप होना चाहिए, ऐसा भी नहीं. ठीक है, हल्का हल्का सा टैप करके हम लोग इसको गीला करेंगे. We'll just tap and make it wet like this. Okay, why we are doing this, I'll let you know. Don't worry. So we'll make it. It should not drip. ऐसे गिरना ऐसा नहीं है. ठीक है, only light wet कर देंगे हम इसको. This is wet. Now, yeah, you can use spray for this. ठीक है, आप spray bottle से spray करके गीला करना चाहते हैं, that is also fine. All right, now take the brush. Take any choice of color. You can even use multiple colors. All right, I'm taking orange color. And now we are going to paint this very easily. So one of the reason why I have wet the cloth, everyone listen to this. Okay, this is because it gets spread out very easily, है ना. गीले कपड़े में कलर बड़ा अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, राइट. तो एक रीजन तो ये हो गया. अभी दूसरा रीजन विल सी. नाउ पीपल, वॉट एवर डिजाइन यू वॉन्ट टू बी प्रिंटेड, ठीक है, आप जो भी डिजाइन चाहते हैं, either you prepare it on a cardboard. All right, what I suggest is take natural leaves जो हमारे नेचर में हैं. There are so many beautiful leaves available in the nature. आप कोई बड़ी अच्छी सी लीफ लेके आ जाएं कहीं प्लांट से and use such leaves. Okay, very good result it will give, and I'll show you the results also, everything. So my suggestion is always, you can print anything. You can print flowers. You can print leaves. आप let's say आपने एक safety pin also, if you have kept it, that also will get printed. Okay, कुछ भी रखिए, सब print हो जाएगा. But if you bring leaves, that gets beautifully printed. Okay, so yes, this I have colored. Let's move ahead. So I have these tiny leaves in my hand. These are fresh leaves, है ना. आपको fresh leaves लेना है. And now just think about a design in your mind, how you have to place these leaves. आपको ये leaves कैसे कैसे place करनी है, एक बार अपने मन में सोच लीजिए, and then start putting them up. Okay, so ये देखिए, I'm just putting them in a circular way. One leaf. अभी आपको समझ आया? Another reason to wet your cloth, that these leaves get stick to the cloth very easily, है ना, अपने आप चिपक जाती है. ये दूसरा रीजन है कपड़े को गीला करने का, कि आपकी जो लीव्स हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस तरह से अपने आप चिपक जाएंगे. यू डोंट नीड टू यूज एनी फेविकॉल और एनीथिंग टू स्टिक देम अप. ठीक है, I have placed them in a circular motion and you can see they are stuck on my cloth, right? All right, now your next step is you have to keep this in the bright sun. Okay, now you may think cloudy sun. नहीं, cloudy में इतना अच्छा effect नहीं आएगा. You need to choose a bright sunny day, happy day. You have to keep it in the bright sun. ठीक है, एकदम चमकते सूरज में इसको आप रख के आ जाइए. I will come back
and I will explain you the phenomena, how this works, kya hai, what result we are going to get. Give me a second. I'll go back. I'll go outside and keep it in the sun, and I'll come back. Okay, 1 minute. All right, we are back here, and yes, I'm coming to all your doubts and all your questions. First of all, let me know, what do you think that what will happen after this? क्या होगा? अभी क्या होगा इसके बाद? After like half an hour or 1 hour, okay? Half an hour or 1 hour, we are going to see the result, and then only we are going to go. आपको क्या लगता है? What is going to happen? Yes, answers in the chat box. Colors might fade. Which color will fade? Leaves print will come on the cloth. Yes, that's right. But how? Any more answers? More answers. Green pigment on the cloth. अरे वाह, ये नया आया है. Okay. Leaves image will come. Okay. And how and what? Acha, which part will fade and which part will remain that as it is? We'll see imprint of leaves on the cloth. Yes. Okay. Orange will fade. Okay. Sun painting will be there. That's very nice. We are doing sun painting only. You see, the leaves will absorb the color. Acha. Okay. Thank you, everyone, for your answers. I'm liking that every one of you is active in answering. Thank you so much. Okay, area bahar jo hai wo ho jayega. All right, everyone. Let's learn what phenomena works here. Okay, I am using these fabric or acrylic colors. You can't see me. Everyone else can see me. Yes, ma'am, Yeah? you're visible. You're visible. So, guys, Okay. if you have any facing problem, please try to rejoin the session once. Check your network. Okay. Thank you. Okay. So now the colors, everyone will listen. Hindi, English, दोनों में समझाती हूँ. All right. So the colors that you are using is either fabric color or acrylic color. All right. Now these colors already have some chemicals in them. ठीक है? क्या बात कह रही हूँ मैं, हिंदी में बोलती हूँ. जो हम कलर्स यूज कर रहे हैं, फैब्रिक या एक्रेलिक कलर यूज करें, इसके अंदर ऑलरेडी केमिकल्स होते हैं. ठीक है, जो आपके कपड़े पे रहना चाहते हैं, एंड दे हैव एवरीथिंग गुड इन देम. ओके, क्या मतलब है? सो व्हेन यू कीप दैट इन द सन, the color which is all around, that is the orange color, which is not under the leaves. ठीक है, जो दूसरा एरिया है जो लीफ के अंडर में नहीं है, वो क्या बोलता है जब सन रेज उसके ऊपर गिरता है? that says that I am not going to lose my color, I am going to stay as it is I am. Okay, because it has that chemicals in them which resist the sunlight, which fight the sunlight. ठीक है, तो जो भी एरिया अराउंड है, अराउंड द लीव्स है, that fight with the sunlight and says we are going to remain as we are. ठीक है जी, जो लीव्स के आसपास का एरिया है वो सन से फाइट करता है, बोलता है हम तो वैसे ही रहेंगे जैसे हैं. So because of the fighting, they do not lose the color. It does not lose the color area around the leaves. ठीक है, the area beneath the leaves cannot fight the sun and lose the color, and this is how we get the print of whatever we keep on the cloth. ठीक है, जो एरिया लीफ के अंडर है या जो भी आपने रखा है उसके अंडर है, वो फाइट नहीं कर पाता सन की रेस से, और वो अपना कलर लूज कर देता है, एंड यू गेट एन इम्प्रेशन beneath that design. ठीक है, very nice technique this is to print anything on your cloth. I'll show you one of the examples. वो अभी बाहर धूप में सिक रहा है, and then we will take up your doubts, and then there is one more technique. Okay, don't go anywhere. And this is one of the examples of sun printing people. Can anyone guess which leaves are these?
कौन सी लीव्स है, कोई बताएगा मुझको? very intelligent people I have in the session, huh? Yeah, okay. Many people are saying papaya, clover. What's that? Clove, clove, right? I think. Pumpkin, apple, karela, papaya. Okay, everyone. Those who said karela, that is right, right? Karela bada khane mein kadwa hai, lekin the leaves are all very pretty and it gives a very pretty impression. So after learning this art form, jab aap nature mein dekhoge, aapko lagega that there are so beautiful leaves present in our nature and you can use them. Leaf stick nahi kar raha hai, देखिए, do not take the leaves of the money plant. मनी प्लांट का लीव्स नहीं लीजिए, दे आर लिटिल वैक्सी, ठीक है. टेक थिन लीव्स, एनीथिंग विच इज अराउंड. आप आराम से जो भी आजू बाजू में ऐसा ही कोई पेड़ भी उग जाता है ना, दैट लीव्स आल्सो यू कैन टेक. Try not to take those leaves of money plant. They are waxy. Okay. So yes. Now there is one more technique before moving to the another technique. Yes, your doubts. एक एक करके. All right, go ahead. मैम मैं बोल रही हूँ, आप जो मतलब बेस का कलर जो ये वो थोड़ा लाइट लिया है, तो अगर कोई मतलब कोई टी शर्ट में मैं डीप कलर करूँ तो उसमें प्रिंट आएगा? टी शर्ट का बेस कलर जो है वाइट है, उसके ऊपर आप कुछ भी ले रहे हैं, जैसे ब्लैक ले रहे हैं, ब्लू ले रहे हैं, पिंक ले रहे हैं, सब पे प्रिंट आएगा, ठीक है. बेस कलर वाइट है तो ही. हाँ, बेस कलर अगर व्हाइट होगा तो उसमें हाँ. अगर नेवी ब्लू कर दूं फिर हाँ, उसके हाँ. बाद कोई लीफ लगाऊं तो तब पे आएगा, सारे कलर्स पे आएगा, ठीक है. कोई सा भी कलर लो, मल्टी कलर भी लोगे तो भी आएगा. ऑलराइट, थैंक यू. yes please. Next question, ma'am. Butterfly the draw ho, what's that? All right, more questions. I'll check the chat box. Just give me a second, people. There's so many in the chat box. How do you do this technique on 1 or 2 meter? हाँ, बिल्कुल नहीं, वॉश करने से बिल्कुल नहीं जाएगा. Okay, no, it is not going to go away anywhere if you're going to wash it. Okay. Can we use artificial leaves? Definitely. आप artificial leaves, artificial flowers ये भी use कर सकते हैं, no problem. Anything. Okay. मैम लीव, हाँ ओके, आपको बताया मैंने इसका आंसर. एंड वो क्वेश्चन, that's right. If doing on cloth shoe should be, हाँ बिल्कुल, आपका शूज जो है व्हाइट हो और वो कपड़े का बना है, it is going to happen on your shoes also, no problem. Okay. Can we use spray? Yes, you can use spray. Acrylic color को थोड़ा पतला करने के लिए क्या यूज करें? ओके, श्योर, मैं अभी बताती हूँ आपको. ठीक है, I think these are the questions. All right, acrylic color or fabric color, if it has become a little thick, there are acrylic mediums in the market. ठीक है. No, you cannot do it on a black color cloth. You have to do it on a white. Then only you are going to get the best results. Okay. All right. So, हाँ जी, acrylic mediums आते हैं market में to thin your color. ठीक है. आप हाँ 2 मीटर में कैसे करेंगे? Okay. See, that is little bit advanced level. All right. Now, yeah. Why do we? No, it is not going to bleed after wash. All right. Please, everyone, listen. What I'm trying to say. Now many of my वार्निश करना पड़ता है, ये कहाँ से आ रहा है पता नहीं, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है. Many people ask me this and where you are getting that fabric को वार्निश करना पड़ता है, कहाँ से आ रहा है ये? नहीं. ओके, आपको कोई वार्निशिंग की जरूरत नहीं, फैब्रिक पे स्पेशली वार्निश नहीं होता, ठीक है. वार्निश इज फॉर कैनवसेस, वुड्स, कोई ऐसी चीज है ना, उस पे वार्निश करते हैं, कोई पेंटिंग बनाते हैं उस पे वार्निश करते हैं. फैब्रिक पे आपको वार्निशिंग की कोई जरूरत नहीं, इट इज गोइंग टू स्टे. बस ये कलर लगाइए, उसे धोइए, दैट इज इट. कुछ भी एडिशनल उसमें करने का जरूरत नहीं है. ओके,
हाँ जी, कैनवस पे आपका अकेले का नहीं है, गेट दिस अ लॉट, ओके। कैनवस पे वार्निश होता है, फैब्रिक पे नहीं। ऑलराइट पीपल, नाउ द वन हु वाज आस्किंग 1-2 मीटर को कैसे करते हैं, नाउ मेनी ऑफ माय स्टूडेंट हैव डन ट्रिमेंडस वर्क ऑन बेडशीट एंड पिलो कवर्स। बड़ी बड़ी लीव्स आती, राइट, पाम ट्रीज का, बनियन बनाना ट्री का, इतना बड़ा बड़ा लीव्स आता है, वो पूरा का पूरा दे पेंट द bedsheet and they keep the whole leaf on the bedsheet and it gives a beautiful impression. Try this out now. How to do that? Okay, आपका bedsheet paint करने में you have to sit it somewhere in the balcony or on the terrace. Okay, पूरा bedsheet को गीला कर दीजिए, भले ही अच्छे से squeeze कर लीजिए and then paint the whole bedsheet. This is one of the technique. Little bit what I say efficient full. थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है इसके अंदर, but print आता है, बड़ा खूबसूरत आता है, ठीक है. दिस इज वन ऑफ द थिंग. देन देयर इज वन मोर ट्रिक टू डू दैट, दैट इज अ पार्ट ऑफ माय एडवांस कोर्स. ओके, अभी एडवांस कोर्स क्या है, कैसा है, वी विल टेल यू. ओके, जस्ट गिव अस फ्यू मिनट्स, बट बिफोर मूविंग लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेक्निक. ठीक है, दूसरी टेक्निक लर्न करें. हो गया, डाउट्स और बाकी है, आई विल टेक इट इन द एंड ऑफ द सेशन. ठीक है जी, एवरीवन रेडी टू लर्न? यस प्लीज. हाँ, ये वाला कोर्स फ्री है. एडवांस क्लास का क्या है हम आपको बाद में बताते हैं ना. हाँ, डिफरेंस बिटवीन फैब्रिक एंड एक्रेलिक कलर. यस, अच्छा मैं पूछती हूँ आप सबसे. आई आस्क वन क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैब्रिक एंड एक्रेलिक कलर? जरा बताएंगे क्या डिफरेंस है फैब्रिक और एक्रेलिक कलर में? एवरीवन. यस यस, आई नीड सम आंसर्स क्विक. फैब्रिक पे जो है वो नेचुरल है और एक्रेलिक कलर जो है उनमें केमिकल्स हैं. आपका आवाज बहुत कम आ रहा है, धीरे धीरे, थोड़ा सा जोर से बोलिए. Yeah, Sachi, can you please speak little bit louder? साफ फैब्रिक है और जो कलर्स हैं वो केमिकल्स के हैं. फैब्रिक कलर सिर्फ फैब्रिक पे किया जा सकता है. ओके, फैब्रिक मैम कलर. आई सेड दैट हाँ हाँ, अब आइए. जो फैब्रिक है वो तो नेचुरल है, आई मीन जैसे कॉटन का है, और जो कलर्स है वो केमिकल के हैं. तो ये शायद उसमें डिफरेंस है. नहीं दिया. फैब्रिक कलर और एक्रेलिक कलर में क्या डिफरेंस है? ये देखिए, ये फैब्रिक कलर है मेरे हाथ में, ये एक्रेलिक कलर है मेरे हाथ में, इसमें क्या डिफरेंस है? ओके मैम, हाँ सॉरी, आई डोंट. नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. फैब्रिक आप फैब्रिक पे एकदम सॉफ्टली स्मूथली स्प्रेड कर सकते हो, उसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती है. एक्रेलिक कलर को थोड़ा डाइल्यूट करके फिर यूज करेंगे तो उसका इफेक्ट आएगा. और हार्डनेस जो होती है, एक्रेलिक कलर क्लॉथ को हार्ड कर देता है, सॉफ्ट नहीं रखता. फैब्रिक कलर उसको सॉफ्ट रखता है. बड़ा अच्छा, वेरी गुड. ओके, दैट इज राइट एंड आई गेट दिस वेरी बहुत कम लोग knows this thing. Okay, so yeah, that's right. Okay, the main difference, everyone, main difference between fabric color and acrylic color is this, that fabric colors are softer as compared to acrylic color. ठीक है, it is not so that we cannot do fabric color on canvases, on woods, on walls. ऐसा नहीं है. We can use both these colors vice versa. यानी कि फैब्रिक कलर भी दूसरी चीजों पे किया जा सकता है, एक्रेलिक कलर भी फैब्रिक पे किया जा सकता है. सन में आपको हाफ एन आवर से 1 आवर रखना है. ठीक है, एंड बट द थिंग इज दैट फैब्रिक कलर्स आर सॉफ्टर एंड स्पेशली मेंट टू डू ऑन फैब्रिक. ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. हाँ, बोथ को मिक्स भी कर सकते हैं. ये लोग कुछ भी सोच लेते हैं. हाँ जी, यस, यू कैन मिक्स देम. ओके, Like it's like if you want to make a new color, हाँ, you can mix there them. are No only 12 problem. colors available. Like if I want to हाँ, make बिल्कुल, India's you can colors, mix. you know, we need to mix every color. So हाँ, that's how that's, you can mix them. Okay, no issues at all. All right. So what I was saying, let me give you an example. Let's say you have drawn an ice cream on your t-shirt using acrylic color. ठीक है, फटाफट मूव करते हैं. हाँ, acrylic color यूज करके आपने एक आइसक्रीम बनाया टी शर्ट पे. ठीक है, now when you are going to wash it after let's say 20 washes, 20 बार उसको धोया, that ice cream is going to develop cracks. ठीक है, उस आइसक्रीम जो आपने बनाई उसमें क्रैक आने लग जाएंगे if you have used acrylic color
and if you have used fabric color, वो बिल्कुल अच्छा रहेगा even after 50 washes. Okay, so this is the difference. अभी आएगा समझ में? All right. Now people, let's move on to the next technique, and आपका जो भी doubt है, I'm going to solve in the last at the last of the session. Okay, let's move ahead with the second technique. A very easy technique. This is, where is my cloth? Yeah. One second. Huh? It was here only. Chalo. Yeah, next technique name is masking. Okay, very easy technique to do, and you guys can prepare a lot of things with this technique as well, and no problem of cloth. Means matlab hai किसी भी type के cloth पे you can do it. It is not required to be 100% natural. बिल्कुल नहीं. You can do it on any type of cloth, any color of cloth as well, and you can even do it on your walls, on your tables, on your doors or anything. ठीक है? बड़ा ही अच्छा technique है. Very good technique this is, and it is quite near to my heart. Why? Because it is very fast to do. Okay, let's move ahead with this technique called masking. Okay, what is the name of the technique? Masking. All right, let's move. Okay, so this is my cloth. I have this cloth only. So you can take any type of cloth. कोई भी तरह का cloth आप ले सकते हैं, कोई problem नहीं है. कोई भी color का cloth भी आप ले सकते हैं. So sorry, I'm having little cup, so I have to eat this. Okay, so let's do some masking, and you need a plastic tape. ठीक है? People ask me, masking tape चलेगा, paper tape चलेगा. I would say this is the best tape. Best it is going to work. Okay, very easily available भी है, और बढ़िया बढ़िया काम हो जाएगा आपका with the normal plastic tape. All right. Now I request you to not ask in the chat box, because my focus will be down here. Everyone, yes, very easily, very quickly, we are going to design. So let's put the tape first in the corner to make it stable. ठीक है? एक कॉर्नर में टेप लगा देते हैं ताकि ये हिले नहीं. Okay. And we are going to see results also, है ना? अभी तो वो धूप में हो रहा है. We will see the results also, and then only we are going to end the session. Okay. Now two tapes vertically. Okay. यहाँ पर ऐसे I am putting them vertically. Ma'am, is this cloth also wet? Na ji, very good question. This cloth you do not need to wet at all. एक पानी का drop भी नहीं गिरना चाहिए इसके ऊपर. ठीक है? This is only wetting of cloth was required for that technique. इसके ऊपर गीला नहीं होना चाहिए. Okay? बिल्कुल भी नहीं. All right. Another here. I hope you guys can see the shiny part. Right? This is the tape. Now two vertical lines, two horizontal lines over here. You can make any design. ठीक है? It is just the design that I am trying to choose. आप कोई सा भी design बना सकते हो. Another line here. It's like a grid. ठीक है? टिक टेक टो वाला गेम खेलते हैं ना वैसा. All right. Now in the center, I'll make a cross. In the center, let's make a cross. And the remaining part, just let's design something like a line over here. And a line over here. Okay, you can choose anything. आप कोई भी design बना सकते हो, कोई tension नहीं है. And somewhere in these corners, I'll make some slanting lines. ठीक है?
and last one over here, that is like this. ठीक है जी. Now this is all covered with a design. Okay, like grid one, then there is a cross, and then there are some lines over here. Now after you place this tape, press it nicely. ठीक है, ये जो है यहाँ पे कोई भी गैप नहीं होना चाहिए. Press each part very nicely, that there shouldn't be any gap between them and the cloths. ठीक है, ये देखिए सबको अच्छे से प्रेस कर दिया है. अभी चूज योर चॉइस ऑफ कलर. आप कोई भी अपनी पसंद का कलर चूज कर सकते हैं. आप मल्टीपल कलर कर सकते हैं. यू कैन डू मल्टीपल कलर्स. एंड आई एम गोइंग टू कलर दिस वेरी फास्ट. लेट मी जस्ट वॉश माय ब्रश. एंड पीपल योर ब्रश शुड नॉट बी वेट. आपका ब्रश गीला नहीं होना चाहिए, उतना ही गीला होना चाहिए. ओनली दैट मच इट शुड बी वेट दैट इट वर्क स्मूथली. ठीक है, अच्छे से स्मूथ से चले, उतना ही गीला होना चाहिए. इसमें पानी नहीं लेना है. यू डू नॉट नीड टू टेक एनी वाटर फॉर दिस. ठीक है, ऑलराइट, लेट्स कलर दिस वेरी क्विकली. आई एम टेकिंग एन इंडिगो कलर एंड ऐसे ही ब्रश, जस्ट मूव द ब्रश एंड yes, while I'm coloring this, any doubts you have, please go ahead. Yes, people, any doubts? And better please come on the audio, because I won't be able to see in the chat box. Any doubts from somewhere from YouTube or anywhere that you get कि ये कैसे करना है, या मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है, how to correct that? Yes. So I had a doubt, like, can we use Posca pens or markers on fabric? Yes, you can use them, but I won't say they are very resistive to water. उनका washing जो है बहुत जल्दी निकलता है. वैसे तो रहते हैं वो, but still after like I say 5 wash के बाद I think वो पूरी तरह से हट जाता है. So then there's nothing that we can do to protect the. You have to always use fabric colors. Okay. आपको कुछ लिखना भी है ना, so better just make a stencil of that and then write it with the fabric color. It is going to stay आराम से 70 to 100 washes. Oh. As आपका कपड़ा खराब हो जाएगा, लेकिन कलर में कोई दिक्कत नहीं आएगा. Okay. Oh, thank you. Yeah. Anything more, people? Come on. Have some technical doubts. Yes. मैम आप पूरा जो कपड़ा है उसमें पूरा टेप लगा लिया. आपको ये दिख रहा है, ये ट्रांसपेरेंट सा पार्ट, ये देखिए उस पे पूरा. हाँ, ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है ये मेरा टेप है, और जो मैं कलर कर रही हूँ वो टेप पे भी जा रहा है और कपड़े पे भी जा रहा है ना. फिर लास्ट में देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है. हाँ, मतलब ये टाइप ऑफ वो जो टेंसिल का काम होता है ऐसा कुछ होता है ना. स्टेंसिल का काम नहीं मैडम, स्टेंसिल थोड़ा सा अलग है इससे, लेकिन हाँ आप कह सकते हो. स्टेंसिल में हम पार्डन क्या मतलब कह रहे हैं? मैं बोल रहा मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ बोल सकते हैं हम, खोल सकते हैं. हाँ आपको बताएंगे, है ना, आप टेंशन नहीं लो. यहाँ पे रहो, क्या रिजल्ट आएगा, कैसे वर्क करेगा, मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ कलर कर रही हूँ इसको. सिर्फ ये एक बात बताइए, ये जो किया है ना कॉटन, मतलब जो बेस कपड़ा फैब्रिक के ऊपर, ये हम चाहे तो कोई भी मतलब ज्योमेट्रिकल शेप भी कर सकते हैं ना. हाँ बिल्कुल. आप कोई सा भी शेप ले सकते हैं, कोई से भी कपड़े पे कर सकते हैं, कोई से भी कलर के कपड़े पे कर सकते हैं. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. 3-4 मतलब डिफरेंट कलर पे भी कर सकते हैं. मल्टीपल कलर भी कर सकते हैं. थैंक यू मैम. ठीक है ना. नाउ एवरीवन, this is going to dry, okay, like it will take little few minutes. तब तक हम क्या करें? All right, so can we add water if it is thicker? Fabric. एक मिनट. Sirisha, your audio is not properly working, so can you please write it down? हाँ Sirisha, yeah, you can just write down your query in the chat box. Yeah ma'am, you can continue ma'am. Okay, नाउ आपने पूछा क्या थिकर है तो वो पानी मिला सकते हैं. मैं कहूंगी पानी उतना ही आपको लेना है जितना आपका ब्रश स्मूथ काम करे. ओके, ओनली दैट मच वाटर इज रिक्वायर्ड that your brush works smoothly. Okay, if your colors have become thicker, then use acrylic mediums which come in the market. ठीक है, इस तरह से दिखते हैं acrylic medium.
ये देखिए, है ना, ये लिक्विड है, थोड़ा व्हाइटिश होता है नेचर में. दिस यू हैव टू पोर लाइक 2-3 ड्रॉप्स इन योर बॉटल. इट विल मेक योर कलर स्मूथ. ओके मैम, हाँ जी. दिस टाइप प्रिंटिंग करने के लिए फ्लैट ब्रश जरूरी है या? हाँ देखो, ऐसे राउंड ब्रश भी ले सकते हो, पर फ्लैट बहुत जल्दी मूव करता है. इफ यू वांट इट टू मूव फास्ट, आपको फास्ट फास्ट काम करना है तो फ्लैट ब्रश से करो, ज्यादा अच्छा हो जाता है. हाफ इंच फ्लैट ब्रश में हो जाएगा? हाँ हाँ हो जाएगा. ओके, थैंक यू. Okay. All right, people, what I was saying, yes. फैब्रिक कलर का नाम देखिए, फैब्रिक आप यूज, कोई सी भी ब्रांड आप यूज कर सकते हैं. No, you don't need to paint multiple layers. It is going to work that way also. शूज पे पेंट करने से निकल रहा है. क्या निकल रहा है? शूज की कलर. हाँ बोलिए. अगर मीडियम वाइट है तो क्या वो कलर चेंज नहीं हो जाएगा डालने? नहीं होता है. डालने से? नहीं, ऐसा नहीं है. उस बहुत वाटरी है ये, तो 2-3 ड्रॉप ही डालना है आपको इसका. ठीक है. ओके, थैंक यू. ऑलराइट. आपका पेंट निकल रहा है, आपका शूज का मटेरियल क्या है उस पर भी डिपेंड करता है. मैम ये क्या था? हाँ जी, कौन क्या था? कौन बोल जो रहा है? आपने अभी बोतल दिखाई थी, वो एक्रेलिक मीडियम है. आपका कलर ओके, सूख जाता है ना, तो उसमें डालते हैं एक्रेलिक मीडियम. ओके मैम, ओके. वो मैं 2 मिनट के लिए उठ के चला गया था, इसलिए देखा नहीं था. अच्छा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. ओके Okay, पीपल, ma'am, एवरीवन. हाँ बोलिए. मैम एक क्वेश्चन, फैब्रिक कलर और एक्रिलिक कलर में से आप कौन सा सजेस्ट करोगे, या दोनों इक्वली काम करते हैं? आप फिर से उठ के चले गए थे जब मैंने आंसर दिया था. नहीं, मैंने लेट ज्वाइन किया था. नहीं, बड़ा लेट आंसर दिया है मैंने अभी रिसेंटली. ओके, सो फैब्रिक कलर्स ही बेटर हैं इफ यू आर डूइंग इट ऑन फैब्रिक. ओके, आप कभी भी फैब्रिक चूज करें तो फैब्रिक कलर्स ही चूज करें, बिकॉज दे आर सॉफ्टर एज कंपेयर टू एक्रेलिक कलर्स. ओके. ऑलराइट. और मैम एक्रिलिक का कितना वॉश तक चल जाता है? चलता है हमेशा, दोनों चलते हैं. डिफरेंस यही है कि एक्रेलिक कलर्स में क्रैक आने लग जाते हैं आफ्टर 20 वॉशेस और सो. आपने कुछ पेंट किया है, उसमें क्रैक डेवलप होएगा, जो फैब्रिक कलर में नहीं होगा. ठीक है. ओके मैम. ऑलराइट. एक्रेलिक मीडियम कैन ओनली बी यूज्ड फॉर. हाँ बोलो, एक जना बोलो. One person at a time. Yes, okay, please. ma'am. The fabrics I want to know that we can use for this painting. For this masking technique, I have answered this many times, dear. For masking technique, any cloth, any color, you can anything you can work on masking technique. But sun printing ke liye you need to take 100% natural cloth and white cloth. Okay. Okay. All right. People now मेरी भी बात सुन लो ना प्लीज. बोलो. मैम the fabric medium that t-shirt पे करते हैं, गाइस वन बाय वन बीच में कुछ रखना पड़ता है क्या? किसके बीच में? मुझे ना बहुत सारी आवाज आ रही है, मिक्स. नहीं, एक्चुअल जब अपन टी शर्ट पे करते हैं तो टी शर्ट के बीच में मतलब कुछ जैसे रखना चाहिए क्या कलर? हाँ, इफ यू डोंट वांट इट टू बी ऑन द अदर साइड, आपको नहीं चाहिए पीछे छपे, तो बीच में रख दीजिए कुछ. डेफिनेटली. ठीक है, कार्डबोर्ड रख दीजिए तो वो पीछे नहीं जाएगा. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. मैम द फैब्रिक मीडियम दैट यू हैव टोल्ड, मैम अगर मतलब कोई कलर सूख जाता है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं, आपने बताया ये चीज. तो ये केवल एक्रेलिक और फैब्रिक कलर अगर सूख जाते हैं तभी यूज कर सकते हैं, फिर नॉर्मल मेरे पोस्टर कलर सूख रहे हैं उनके लिए भी आ सकता है? उनके लिए भी डाल सकते हो, बट स्टिल वो शायद उतना इफेक्टिव नहीं होता है. वैसे आई हैवंट यूज्ड पोस्टर कलर लॉट. हाँ जी, बेस्ट इन्हीं दोनों कलर्स के लिए रहेगा. हाँ, बिकॉज दैट इज मेंट फॉर देम. पर आप उसमें भी डाल के देख लीजिए, नहीं तो आप थिनर भी यूज कर सकते हैं फॉर दिस एक्स्ट्रा पर्पस. आपकी नेल पेंट को थिनर थोड़ा स्मूथ बना देता है. सेम वे दिस आल्सो वर्क्स. ओके, थैंक यू सो मच मैम. ऑलराइट. Yes, people, everyone, please listen to me. मेरी भी तो 2 मिनट बात सुन लो. All right, so yes, now there's